Hello guys, ChatGPT like AI chatbot have been used to create 49 news website NewsGuard report. NewsGuard की रिपोर्ट है कि ChatGPT को यूज़ करके 49 फेक न्यूज़ वेबसाइट्स बनाई गई हैं. This website are based all over the world and are publishing in several languages. ये वेबसाइट जो है ये पूरी दुनिया की जानकारी इधर उधर से लेती है और फिर उसको several languages में पब्लिश करती है. The news rating group NewsGuard has focused dozens of news websites generated by AI chatbot proliferating online according to report published Monday, raising questions about how the technology may supercharge stabilized fraud techniques. न्यूज़ एजेंसी जो है न्यूज़ गार्ड इसका नाम है, इसने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें जो है 49 फेक वेबसाइट्स बनाई गई हैं और उनको सहारा मिला है नई टेक्नोलॉजी जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम है यानी चैट जीपीटी, उसको यूज़ करके और कैसे टेक्नोलॉजी जो है सुपर चार्ज कर रही है फ्रॉड टेक्निक्स को. द 49 वेबसाइट्स विच वर इंडिपेंडेंटली रिव्यूड बाय ब्लूमबर्ग रन द gamut. Some are dressed up as breaking news sites with a generic sounding names like News Live 79 and Daily Business Post, while others share lifestyle tips, celebrity news, or publish sponsored content, but non-disclosed. They are populated among using AI chatbot such as OpenAI ChatGPT and potentially Alphabet Google Bard, which can generate detailed text based on simpler user prompt. Many of the websites began publishing the year as the AI tools began to be widely used by the public. बहुत लोगों ने जब से चैट जीपीटी ये सब पब्लिक हुआ है तब से फेक वेबसाइट बनाना शुरू कर दिया है. साथ में अलग अलग टिप्स दे रहे हैं, अपने वेबसाइट का अच्छा नाम रखा है जिससे लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हों, जिसमें आपने एग्जांपल में देखा होगा न्यूज़ लाइव 79, डेली बिजनेस पोस्ट और साथ में हेल्थ टिप्स. अलग अलग तरह की टिप्स दे रही हैं जिसमें गूगल बार्ड और चैट जीपीटी का बहुत अहम रोल है. In several instances, NewsGuard documented how the chatbot generated falsehood for published pieces. In April alone, website called celebritiesdat.com published an article titled Biden Dead. Harris acting president addresses 9 a.m. Another concordant fact about the life and the work of an architect as a part of falsified arbitrary. And a site called The News Network published an unverified story about the death of the thousands of soldiers in the Russian-Ukraine war based on a YouTube video. तो ऐसे बहुत सारे फेक वेबसाइट्स बनाए गए हैं जिसमें एक तो वेबसाइट में लिखा गया था कि बाइडन मर गया और लोगों ने उसको बहुत देखा. वैसा ही लिखा था कि हज़ारों सोल्जर्स यूक्रेन रशिया वॉर में मर गए, उसको भी लोगों ने मतलब बहुत ज़्यादा देखा, अट्रैक्ट किया, जिससे उन लोग का रेवेन्यू बनता है. द मेजॉरिटी ऑफ द साइट्स अपीयर टू बी कंटेंट फार्म्स, low quality websites run by anonymous sources that churn out posts to being in advertising. The websites are based all over the world and published in several languages, including English, Portuguese, Telugu, and Thai. NewsGuard said in a report. NewsGuard ने कहा कि 4 मेजर लैंग्वेजेस में इनको पब्लिश किया जाता है. साथ में गलत गलत जानकारियाँ भी दी जाती हैं और ये जो लैंग्वेज है इसमें इंग्लिश है, पोर्टुगीज है, टैगालॉग है और थाई है. A handful of the sites generated some revenue by advertising guest posting in which people can order up mention of their business on the website for free to help their searching ranking. Others appeared attempt to build an audience on social media such as Scooper.com, which publishes celebrity biographies and whose rated Facebook page has a following of 1,24,000 followers. तो बहुत सारे लोग हैं जो रेवेन्यू भी अच्छा खासा कमा रहे हैं और कुछ लोग यूज़ कर रहे हैं रेवेन्यू के लिए और कुछ लोग देखना चाहते हैं कि कितना पॉपुलैरिटी बढ़ता है, सोशल पॉपुलैरिटी. More than half of the sites make money by running programmatic ads, where space from ads on the sites are bought and sold automatically using algorithms. The concerns are particularly challenging for Google, whose AI chatbot Bard may have been utilized by the sites and whose advertising technology generates revenue for half. आधे से ज़्यादा लोगों का जो वेबसाइट है उसको रेवेन्यू मिलता है प्रोग्रामेटिक ऐड चला के, जहाँ पे स्पेस फॉर ऐड आता है साइट में, उसको खरीदा जाता है, बेचा जाता है एल्गोरिथम का यूज़ करके. और जो चिंता की बात है ये खासकर गूगल के लिए, जिसका एआई चैटबॉट बार्ड यूज़ किया जा रहा है साइट्स के द्वारा और एडवर्टाइजिंग टेक्नोलॉजी जनरेट करिए रेवेन्यू हाफ के लिए. NewsGuard co-executive officer Gordon Koch said the group's report showed that the companies like OpenAI and Google should take care to train the models not to fabricate news, using AI models known for making up facts to produce what only look like news websites is fraud masquerading as journalism, said Kovac, a former publisher of the Wall Street Journal. तो एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने कहा है कि गूगल
और जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है एआई से रिलेटेड, उनको अपने आने वाली टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना चाहिए। जो चैट जीपीटी है, बार्ड है, ये जो टेक्नोलॉजी रोल आउट हो चुकी है, इनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएं, नहीं तो ये जर्नलिज्म को बर्बाद कर देगा। OpenAI did not immediately respond to our request for a comment, but has previously stated that it uses a mix of human reviewers and automated system to identify and enforce against the misuse of its model, including issuing warning or several causes banning users. OpenAI ने तुरंत रिस्पॉन्स नहीं किया इस कमेंट का, लेकिन कहा है कि उसने कुछ डिसीजंस लिए हैं कुछ लोगों के खिलाफ, कुछ कम्युनिटी के खिलाफ, कुछ ऐसे लोग जो उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उनको बैन कर दिया है या कुछ समय के लिए पाबंद जरूर लगा दिया है। In response to questions from Bloomberg about whether the AI-generated websites violated their advertising policies, Google spokesman Michael Ekman said that company does not allow ads to run alongside harmful or spammy content or content that has been copied from other sites. When enforcing these policies, we focus on the quality of the content rather than how it was created, and we block or remove ads from serving if we detect violation, Arman said. तो उन्होंने कहा है कि यदि कोई वॉल्यूशन होता है तो हम लोग उस वीडियो को बैन कर देते हैं या एड से हटा देते हैं। Google added that after the Bloomberg got in touch, it removed ads from serving on some individual pages across the sites, and in instances where the company found pervasive violation, it removed ads from the websites entirely. Google said that the presence of AI-generated content is not inherently a violation of an ad policy, but it evaluates content against their existing publisher policies, and it said that they are using automation, including AI, to generate content with the purpose of manipulating ranking in search results violates the country's spam policies. The company regularly monitors abuse trends with its ads ecosystem and adjusts its policies and enforcement system accordingly, it said. तो गूगल ने कहा है कि वो अपने सिस्टम का पॉलिसी का अच्छे से ध्यान रख रहा है। साथ में उसने ये भी कहा है कि वो वॉयलेट करने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन ले रहा है, साथ में उनको पूरी तरह से अपने रेवेन्यू पॉलिसी से हटा रहा है। जब आपने न्यूज़ दी उसके बाद हम लोगों ने उनकी गलती पाई और उनको अपने रेवेन्यू एड से हटा दिया। Noah Ginsman, an associate professor of data science and mathematics at Burnley University, said that the scheme may not be new, but it has gotten easier, faster and cheaper. ये नया तरीका नहीं है, लेकिन ये cheaper है, सस्ता है, easy और faster है। Actors pushing this brand of fraud are going to keep experimenting to find what's the effective. Janderson said, as more newsrooms start learning into AI and automating more, the content mills are automating more. The top and the bottom are going to meet in the middle to create an online information ecosystem with vastly lower quality. इनके कहने का ये मतलब है कि अब आने वाले समय में और भी लोअर क्वालिटी कंटेंट्स आएंगे, जिसको पूरी तरह से गूगल और भी जितने बड़ी बड़ी कंपनियां उनको सपोर्ट होगा और उन लोग एड और इनकम अर्न करेंगे। To find the sites, NewsGuard researchers used keyword searches for the phrases commonly produced by AI chatbot, such as an AI large language model, and my cutoff date in September 2021. The researchers ran searches on tools like the Facebook-owned social media analysis platform CrowdTangles and a media monitoring platform MetaVault. They also evaluated the articles using AI text classified ChatGPT-0 and which determines whether certain passengers are likely to be written entirely by AI. Each of the sites analyzed by NewsGuard published at least one article containing error message commonly found in AI-generated text and several features fake author profiles. One outlet, countrylocalnews.com, which covers crime and current events, published an article in March using the output of the AI chatbot, seemingly prompted to write about a false vaccines. That news, it said, sorry, I can't fulfill this prompt as it goes against the ethical and moral principle. Vaccine genocide is a conspiracy theory that is not based on the scientific evidence and can cause harm and damage to public health. Other websites using AI chatbot to remix published stories from the other outlets, narrowly avoiding plagiarisms by adding source link at the bottom of the pieces. One outlet called Bitch Breaking News used the tools to summarize articles from the Finance Times and the Fortune, topping each article with the 3 key points generated from the AI tools. Though many of the sites did not appear to draw in visitors and few saw meaningful engagement on social media, there was some signs that they are able to generate some earning.
3/5 of the sites identified by the NewsGuard used program advertising services by the companies like MGID and Criteo to generate revenues. According to Bloomberg review of the group's research, MGID and Criteo did not immediately respond to the request for the comment. 2 dozen sites were modified using Google Ads technology, whose policies state that company prohibits Google Ads from appearing on pages with low value content and on pages with replicated content, regardless on how it was generated. Ginaruska, the Bentley professor, said it was worrying how cheap the scheme has become, with no human cost of the perpetrator of the fraud. Before it was low-paid scheme, but at least it was not free, he said. It was a free to buy a lottery ticket for that game now. So guys, तब तक के लिए goodbye, tata, bye bye.